real estate value over time? Is it location? Is it timing? Or is it something bigger? In Finance Ka Funda, we decode the fundamentals behind property wealth creation and why infrastructure continues to be one of the biggest game changers in this space. If there's one factor consistently driving real estate wealth in India, it is infrastructure. From highways to railways, connectivity is no longer just about mobility, it's about value creation. The Ministry of Railways recently commissioned nearly 1,900 kilometers of key projects, including major lines such as Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link and the Bairabi-Sairang rail line. Track expansion has also accelerated to about 8.6 kilometers per day, more than double the pace seen a decade ago. So what does this mean for real estate? The moment a railway line, a highway or an airport is announced, land prices in surrounding areas begin to rise. This is because connectivity brings faster access to cities, increased economic activity and higher rental and resale potential. We've already seen this play out in multiple corridors across India where early investors benefit the most. This is why Tier 2 and Tier 3 cities are also gaining traction. They are the biggest beneficiaries of this new infrastructure. For investors, this strategy is simple. Follow infrastructure, not just location. But in today's market, the biggest returns are not in already developed cities, but in areas about to be developed. In Indian real estate, infrastructure is not just about development, it is the foundation of wealth creation. And it's not just roads, railways, or physical development that's reshaping the real estate anymore. It's India's digital push that is quietly transforming the sector. And from how transactions happen to how businesses operate and how spaces are designed. In What's New, we look at how digital and telecom infrastructure is redefining the future of real estate. India's digital and telecom infra is reshaping real estate. India's next big real estate driver isn't just physical, it's digital. The country's digital public infrastructure is expanding at an unprecedented scale. Under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, deposits have crossed 2.94 lakh crore, reflecting deeper financial inclusion. Meanwhile, UPI processed nearly 21.7 billion transactions in a single month. This rapid digitization is transforming how people earn, spend, and invest, including in real estate. But the bigger shift is happening in telecom. The Department of Telecommunications has now allowed enterprises to set up their own private captive telecom networks without requiring a full telecom license. So why does this matter for real estate? Because digital infrastructure is now a key factor in commercial leasing decisions. Smart buildings and offices, data centers and tech parks. Cities and business districts with stronger digital ecosystems are becoming more attractive to global companies. From payments to connectivity, digital infrastructure is now And with
with that, it's a wrap on this episode. What is clear is that India's real estate sector is entering a new phase. One that's being driven by stronger policy frameworks, expanding infrastructure, and evolving buyer aspirations. Now, whether you're a home buyer, an investor, or simply tracking the market, these shifts are creating new opportunities and new ways to think about real estate. Thank you so much for watching. My name is Nayan. Stay tuned, and we will see you in the next episode. प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिम MDH का जल जीरा जीरा सिम जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। MDH थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Good evening, viewers. You're watching the Saturday edition of 6 Stories at 6, and I am Rakshita Mishra with you. Let's get started with the top story that we're going to track for you in the next 25 minutes. The first one, of course, coming in from the war zone. We'll bring you the latest updates from the West Asia war. We are also going to get you an update on a latest testimony or latest example of Trump is losing it. He's losing the plot. He's humiliating the world leaders. And latest in the list is Mohammed bin Salman. Also on the show, we're going to get you the latest update coming in as far as the US strikes on nuclear facilities in Iran are concerned. Much more
lined up for you. First, let's take a look at the first story we're bringing to you. And in fact, let me just tell you the lineup. We're still continuing with the lineup. So the nuke strikes are on target. Story number 4. We can go to story number 4. And that is how NCR has got a major boost. Noida Airport has been inaugurated today by the Prime Minister and the Chief Minister Yogi Adityanath in Jewar. That's the Jewar International Airport. And also, we're going to get you updates from the poll-bound state of West Bengal. BJP gears up for the polls. Amit Shah today released a charge sheet against the TMC government, and in fact even TMC has now countered it with another charge sheet against the BJP. So it's a war of charge sheet, it seems, before the manifesto. And viewers, we conclude this bulletin with updates coming in from Nepal. Just a day after rapper turned politician Balendra Shah takes oath as Nepal's Prime Minister, the former Prime Minister Sharma Oli is arrested. So let's start with the top story on 6 Stories at 6. Now, President Trump, Donald Trump, has done it again. He has humiliated another world leader, and this time it's the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. And in fact, he has also gone on to say that the Gulf leaders should be listening to him. Take a look at this report. In fact, Donald Trump, he was speaking in Florida, and in his address, we can see that he was completely losing it. It's not the first time he has humiliated any world leader. And we've seen that how many times that he's done that. And Saudi Arabia, as per reports, has been pushing, egging US on to attack Iran. And Trump has been making statements. 3 days back, he said that MBS is with him. He's fighting with him, fighting with the United States. And now he's also humiliating him at the same time. So we'll try and get you more updates on that. He humiliates the Crown Prince, even says that he better be nice to me in sort of a threatening tone. And this could be a message that is being sent out to him. Trump knows the reasons best. But clearly we can see with Trump not being clear of an exit strategy from this war, he is losing the plot. He's losing track, losing control of his words, as he often does. Not the first time though, but he clearly is scrambling for options to now back out from this war. And he's now talking about the Gulf leaders, saying that the Gulf leaders should be listening to him. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. US President Donald Trump, in his address in an investment summit in Florida, made explicitly shocking remarks. Trump made tall claims about himself while mocking other leaders. On Pakistan, the US president confessed a strategic preference for losers, noting that their presence provides a significant boost to his own self-esteem, while also expressing a distaste for people more successful than him. You know, I've watched a lot of people, leaders, great leaders. And, you know, the one thing about sports is you break it down into, you know, a 2-hour period, something nice. You don't have to wait a lifetime to find out if somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. In a shocking claim, Trump made explicit remarks about the future king of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. He said, though, he said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, you know, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half. It was 6 months ago. But a year ago, you were a dead country. Now you're literally the hottest country anywhere in the world.
And that was before we beat the hell out of them. He made a gaffe about the Strait of Hormuz and called it the Strait of Trump, while maintaining there are no accidents, with him admitting that the slip of tongue was intentional. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. In a statement, the president announced the immediate annexation of the Gulf of Mexico and rebranding it the Gulf of America, while also claiming that Cuba is next. You wouldn't have to use it. I built this great military. I said, you'll never have to use it, but sometimes you have to use it. And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Trump also addressed the Nobel Prize snub, saying the committee has lost credibility, claiming he saved 50 million people and stopped 8 wars. As the war in West Asia reaches a 1-month mark, Trump continues to say he is a peacemaker. Well, I'll tell you what. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. Some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. The latest statements from Trump raise concern whether these remarks are calculated power plays or intentional provocations as the global community suffers from the consequences of the war in West Asia. Now, tensions in West Asia continue to escalate as Israel is striking multiple nuclear sites in Iran, targeting key plutonium and uranium facilities, while the United States maintains a growing military presence in the region. Officials warn that repeated attacks, particularly near the Bushehr nuclear plant, raise the risk of radiological disaster, drawing sharp condemnation from Tehran and the concerns from the nuclear watchdog IAEA as well. And with President Trump citing a pause in certain operations, but keeping pressure on Iran, analysts say that the coming days will be critical in determining whether the situation is going to intensify or will de-escalate. In the ongoing West Asia war, US-Israel allies have once again targeted energy infrastructure. Fresh strikes on Bushehr nuclear plant are furthering concerns of a radiological disaster. The International Atomic Energy Agency has expressed deep concern, warning that any damage to nuclear facilities could lead to a major nuclear accident. Iran, on the other hand, condemns the strikes as a violation of the international law and calls them a threat to regional security. This is not a one-off incident. Before this, Israel struck Iran's Arak nuclear complex, a key plutonium production site for nuclear weapons. Further, to dismantle Iran's nuclear capabilities, Israel struck a uranium production plant in Yazd strike and Iran's Bushehr nuclear plant. A pattern to dismantle Iran's nuclear enrichment program that comes with warnings of nuclear blackmailing. As you know, we're gathered at a moment of bold action and historic decision to make America and our allies safer and stronger, more prosperous, more successful than ever before. And that's what's happening. Tonight, we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years, and beyond that. With the war escalating and President Trump claiming a pause on certain military actions, even as the US builds up troop presence and pressure on Iran, it remains to be seen how the upcoming days will unfold.
right, now, Noida International Airport is the second international airport in Delhi NCR now. It has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi alongside UP Chief Minister Yogi Adityanath in Jewar, Uttar Pradesh today. The first phase of the airport developed at an estimated cost of 11,200 crore rupees. Here's more on that. Noida International Airport, the second international airport in the Delhi NCR region. It has been inaugurated today. The airport has annual passenger handling capacity of 12 million. It is India's largest greenfield airport. The first airport in the country constructed with net zero emissions. The airport features extensive connectivity to neighbouring Uttar Pradesh cities, including Noida, Greater Noida, Agra, Mathura and Ghaziabad. Addressing the inaugural event, Prime Minister Narendra Modi spoke on boosting connectivity through the project. यहाँ किसान जो उगाते हैं, यहाँ उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। Modi also said that the Noida International Airport will also provide opportunities to the youngsters. आज यहां जेवर में भी MRO सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। In the India's aviation industry, today was the inauguration of Jewar International Airport, and Prime Minister Narendra Modi himself came here and inaugurated the phase 1 of the Jewar International Airport. There was this inauguration ceremony organized today where it was graced by Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister said that India is tackling West Asia crisis with full strength. एकजुटता के साथ मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करना है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। PM Modi also targeted the Congress government, saying that the centre and previous state governments did not allow the foundation stone to be laid. But politics aside, the airport is going to benefit the common citizens of the country and will be a massive boost for the aviation sector. Now, the Battle of Bengal is only getting sharper and sharper. Home Minister Amit Shah today took on the ruling Trinamool Congress while tabling a political charge sheet. Not a manifesto, but first a charge sheet. Shah highlighted the TMC government's failures in the last 15 years, right from governance to economic discrepancies. Home Minister, in fact, called this election a test between fear and trust. Listen in. The battle for Bengal is getting sharper. BJP party, vanished party. As the state readies to go for polls, the BJP has begun its campaign in the state. 26 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं।
While on his visit to the poll-bound state, Union Home Minister Amit Shah today released a political charge sheet against the ruling TMC and traced its failures in the last 15 years of rule in Bengal. ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। Calling the upcoming elections a choice between fear and trust, Amit Shah highlighted everything from infiltration, corruption and scams to law and order charges against the Mamata government. बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। Accompanied by state BJP leaders Suvendu Adhikari and Samik Bhattacharya, Shah said that BJP is here to course correct TMC's mistakes while it was ruling the state of Bengal. एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव है। West Bengal goes to vote in two phases. First on the 23rd and second on the 29th of April. And the heat for the seat is gaining pace. Meanwhile, Nepal's political landscape has seen a dramatic turn. Now, former Prime Minister KP Sharma Oli has been arrested along with his Home Minister, the former one, Ramesh Lekhak. Both are being now probed over the deadly protest last year that shook the nation, the Gen Z protest as they were called, and it brought down his government. This comes just a day after Balendra Shah takes over, he takes oath as the new Prime Minister of Nepal. म बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। Less than 24 hours after taking charge and vowing justice for protest victims, Prime Minister Balendra Shah's government has acted fast. Nepal police moved in early Saturday morning, arresting former Prime Minister KP Sharma Oli from his residence near Kathmandu. Former Home Minister Ramesh Lekhak was also taken into custody in connection with a violent crackdown on last year's protests. The arrest stemmed from the September 2025 unrest, a Gen Z-led uprising against corruption and economic distress. In just 2 days of violence, at least 70 people were killed and over 2,000 were injured. Government buildings were torched, top leaders forced to flee, and Oli's government collapsed overnight. A high-level probe later found serious lapses, not a direct order to fire, but a failure to stop the use of lethal force. Acting on that report, the new government has wasted no time. Home Minister Sudan Gurung made it clear that no one is above the law and this is just the beginning of the justice. A promise made and action delivered within a day. Nepal's new regime is sending a strong message that justice over last year's bloodshed has now begun. थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा। Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record.
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा सिर्फ असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing. प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और
हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen, and why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. जय हिंद। जय हिंद। ये भारत माँ के बेटे और बेटियों की तो आवाज़ है नहीं, क्योंकि भारत माँ ने बेटे और बेटियां पैदा ही नहीं किए। भारत माँ ने तो शिंगने और शेर पैदा किए, और शिंगने और शेर जब दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है। तो कम से कम इतनी तेज आपकी बुलंद आवाज़ होनी चाहिए कि इस रिपब्लिक टीवी के इस प्रांगण में कम से कम पता चले कि इस हॉल में कुछ हो रहा है। तो जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। आपका जोश यूं ही निरंतर बना रहे। और आज जो रिपब्लिक टीवी ने राष्ट्रीयता के ऊपर जो एक कॉन्क्लेव रखा है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हम सबकी पहचान इस राष्ट्र से है। इस राष्ट्र ने हमें जन्म दिया, खाना दिया,
शिक्षा दिया, संस्कार दिया, और हमें क्या चाहिए? हमें इस राष्ट्र को देने का वक्त आ गया है और हम सब एक भारत की वो ताकत हैं जिस ताकत से ये राष्ट्र ऊंची बुलंदियों तक पहुंच सकता है। हम भारत को कैसे देखते हैं? आप भारत को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? अरे वो 21-23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे की तरफ जाता है और फिर भी कहता है मेरा रंग दे बसंती चोला। वो 24 साल का लड़का जो 15 साल की अवस्था में अदालत में खड़े होकर के कहता है आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, और इतनी मोहब्बत उस राष्ट्र से करता है। आप भारत को उस नज़र से देखिए जहाँ इस भारत की बेटी अपने कमर पर दत्तक पुत्र को बांध करके युद्ध के मैदान में कूद जाती है। आखिरी क्षणों तक वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है, बल्कि अंग्रेजों का सामना करती है। ये भारत वो भारत है। ये वो भारत है जहाँ 16 साल का लड़का दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धरों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ता है। ये वो अभिमन्यु का, वो अर्जुन का, वो कृष्ण का, वो राम का भारत है। वो कबीर का भारत है, वो मीरा का भारत है, वो रैदास का भारत है, और हम उसी भारत की संतान हैं। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद अगर एक मनुष्य का शरीर मिला तो वो भारत माँ के गर्भ से मिला। ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। शायद हमने 100 पिछले जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, तब हमें ये भारत माँ का गर्व मिला होगा। पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। हर मुल्क अपने देश को भूमि का एक टुकड़ा समझते हैं, लेकिन हम इस भूमि के टुकड़े को माँ समझते हैं। यही हमारी पहचान है। माँ एक मातृत्व की, एक त्याग की, एक साहस की प्रतिमूर्ति होती है, जो अपने बच्चे में साहस भरती है और इस राष्ट्र नहीं दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम कर देती है। इसी भारत माँ की धरती पर मुझे पैदा होने पर गर्व है। मैं यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव औरंगाबाद अहीर जिला बुलंदशहर में है, एक किसान और जवान के घर में पैदा हुआ। पिता से बचपन से अपनी युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हुआ। किताबों में ऐसे योद्धा सैनिकों की वीरता को पढ़ करके बड़ा हुआ। खेत खलियानों में काम करता बड़ा हुआ, जिन्होंने 65 और 71 में 8 पैटर्न टैंकों को अकेला सैनिक उड़ा देता है, और वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है। मैंने उस योद्धा की कहानी को पढ़ा जिसने 21 साल की अवस्था में 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ी और दुश्मनों के टैंकों को नस्त नाबूद कर दिया। उनके जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं तो हमारे मनोभाव जागृत होते हैं। मैंने उनको पढ़ करके, सुन करके, जब मन के अंदर वो हृदय में वो भाव जागृत हुआ, यार फौज में जाना है। बच्चों, एक इंसान 2 तरह की जिंदगी जीता है, सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। सक्सेस आपको मेहनत से मिल सकती है, लेकिन लाइफ का पर्पज नहीं मिला तो वो सक्सेस बेकार हो जाती है। तो अपने आप से पूछा, फौज में क्यों जाना है? युद्ध लड़ना है। क्योंकि पिता से वो स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में सुना कि जब 71 में वो लाहौर तक पहुंच गए तो उन्होंने नलकूप के अंदर पाकिस्तानियों ने जहर डाल दिया था, जिससे हमारे सैनिक बहुत सारे वहाँ पर शहीद हुए। तो पिता बताया करते थे कि चारों तरफ साथियों की लाशें पड़ी होती हैं, ना खाना मिलता है, ना सोना मिलता है, ना पानी मिलता है, लेकिन फौज फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। ऐसे कैसे होगा? बस उन परिस्थितियों को जीने की परिकल्पना अपने हृदय में जीने लगा। और ये सच है कि सपने उसी के पूर्ण होते हैं जो उन सपनों को जीता है। आंखों से जो देखता है उसके सपने बहुत कम पूर्ण होते हैं। ये हृदय, ये सोल, ये आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा हमारे उन सपनों में शामिल हो जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमें सपनों को साकार होने से कोई रोक सके। कोई नहीं रोक सकता। उन खेत खलियानों में काम करता हुआ बड़ा हुआ, 11th पास किया, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। जब हम आग का नाम सुनते हैं
तो लगता है कि आग जला देगी, लेकिन आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती भी है। जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं तमाम आग में पिघल करके एक नए रूप में परिवर्तित हुए। तो फौज एक सिविलियंस बच्चे को 9 महीने की ट्रेनिंग की आग की भट्टी में इसलिए तपाती है ताकि वो एक सिविलियन फौजी बन जाए। और फौजी इस राष्ट्र का विश्वास होता है, इस राष्ट्र का भरोसा होता है। जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है, वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं होती, वो वर्दी लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत होती है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, लेकिन हमारा परमात्मा हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन के पथ को देख सकता है। उसको मालूम था उस कश्मीर की धरा पर एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है, ताकि बड़े युद्ध को लड़ने लायक बन सकें। इतनी क्षमता, इतनी शक्ति हमारे मन और मस्तिष्क में हो कि जब वो परिस्थिति, वो युद्ध सामने आए तो ये पैर न लड़खड़ाएं, ये हाथ न कपकपाएं, बल्कि सीना तान करके उस चुनौती और उस युद्ध में जीत को हासिल कर सकें। हम सब के हर सेक्टर के अंदर 3 पोजीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन फौज के अंदर कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती है। वहाँ विजय या वीरगति होता है, वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता, दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो उस परिस्थिति के लिए तैयार किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1990 से आज तक कश्मीर की धरा पर हिंदुस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आप जानते हैं जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? जानते हैं? कोई भी नहीं जो जानता हो जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज टाइम होता है, समय। समय इस जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। जो आज अभी इन पलों को बैठ करके आप जी रहे हो, कल पूरी दुनिया की दौलत भी किसी के कदमों में ला करके डालोगे, आज के इन पलों को खरीद नहीं पाएंगे। और दुनिया में कोई इतना बड़ा धावक नहीं हुआ कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ सके, कोई नहीं पकड़ सकता। ये जीवन, ये समय नदी के बहते हुए जलधारा की समान है। जो जल के कण अभी हमें स्पर्श कर रहे हैं, अगले पल वो हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो समय अपनी गति से चलता है। समय व्यतीत हुआ, वर्ष 1998 में आया। आप सब जानते हैं 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यह आभास और एहसास हुआ कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। उन्होंने शांति का पथ अपनाया, और ये सच है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और प्रगति भी होती है। किसी मुल्क की उन्नति और प्रगति के लिए मुल्क में शांति चाहिए, एक सोसाइटी की उन्नति और प्रगति के लिए सोसाइटी में शांति चाहिए, एक घर की उन्नति और प्रगति के लिए घर में शांति चाहिए, और एक इंडिविजुअल इंसान की उन्नति और प्रगति के लिए उसके मन और मस्तिष्क में शांति चाहिए। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस कहती है इस बॉडी में एनर्जी है, और एनर्जी की डेफिनेशन आप जानते होंगे कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आध्यात्म कहता है इस शरीर के अंदर आत्मा है, और आध्यात्म उस आत्मा की को परिभाषित करता है कि आत्मा ना जलती है, ना भीगती है, ना सूखती है, बल्कि शरीर को परिवर्तित करती है, शरीर परिवर्तित करती है। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो एनर्जी का जो केंद्र है, जो भंडार है, वो यहां पर है, और वो भी लिक्विड फॉर्म में है। आप जानते हैं शांत पानी कैसा होता है? कैसा होता है शांत पानी? कोई भी? कैसा होता है शांत पानी? जी मैम? गहरा होता है, शांत होता है, लेकिन शांत पानी दर्पण होता है, दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। जब आपके मन और चित्त शांत होगा, तब उस परमात्मा की दी हुई शक्ति का आप आभास कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान इस यूनिवर्स का यूनिक है, उसके जैसा परमात्मा ने दूसरा नहीं बनाया है।
तो इस उन्नति और प्रगति के लिए मन और चित्त में शांति चाहिए, तभी आप समय पर अपना डिसीजन ले पाएंगे और जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो उसी शांति को, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए, शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, लाहौर बस यात्रा शुरू करी, ताकि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हों। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। तो उसने कारगिल, बटालिक, दराज, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर, कल्पना कीजिए -60, दिल्ली और एनसीआर के पास जब 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर आता है, तमाम संस्थान बंद हो जाते हैं, हम घरों में बिस्तरों में दुबक जाते हैं। लेकिन आपके गांव का, शहर का, प्रदेश का, देश का बेटा और बेटी उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन कर रहा होता है, ताकि इस देश की आवाम अपने घरों में चैन की नींद सो सके और आप जैसे युवा अपने स्कूल कॉलेजों के अंदर आराम से पढ़ सके। उसी जहां -60 में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे दुर्गम इलाकों के ऊपर उन्होंने हमारे तमाम पोस्टों के ऊपर कैप्चर कर लिया। इतनी मजबूती के साथ वहां पर वो बैठ गए, अम्युनिशन, वेपन्स, मैन पावर का इतना स्टॉक कर लिया, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम यहां से वापस जाएंगे। उनकी जो युद्ध नीति थी कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके, कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में करना, लेकिन वो भूल गए ये हिंदुस्तान की धरती है और इस हिंदुस्तान की धरती में सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उन पहाड़ों के शिखरों की तरफ जो 13,000 से 18,000 फीट ऊंचे थे, -20 डिग्री टेम्परेचर, मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तप रहा था, ये चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाते रहे। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को हमें भी द्रास सेक्टर भेजा गया। सबसे पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमें युद्ध लड़ने का हमें अवसर प्रदान हुआ। बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने अपनी युद्ध नीति, रणनीति के तहत उस पहाड़ी पर हमले शुरू कराए। 22 दिन तक उस पहाड़ी पर हम युद्ध लड़ते रहे और इस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को उस तोलोलिंग पहाड़ी पर हिंदुस्तान की फौज ने विजय पताका फहराया था। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ के एक प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला यादव साहब एक फौजी और सिविलियन में क्या फ़र्क है? मैं कहा सर अगर ऐसे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं, 2 हाथ 2 पैर 2 का आपके भी हमारे भी हैं, लेकिन एक फ़र्क है, ये युवा बच्चे बैठे आपको बहुत कीमती चीज़ बता रहा हूँ कि सर सोच का फ़र्क है। बोला कैसी सोच? कि एक सिविलियंस को छोटी सी भी उपलब्धि, सफलता मिल जाए तो सर वो 10 दिन तक काम नहीं करता है। क्या करता है? वो जश्न मनाता, पार्टियां करता है। लेकिन हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, पल भर के लिए सिर्फ जश्न मनाती है और फिर सफलता को बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है, ताकि वो सफलता उसके यहाँ पर नहीं बल्कि उसके बूट की ठोकरों पे रहे, ताकि उसमें अभिमान ना आए और वो जवान संघर्षशील रहे और वो ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग करता रहे, एक नई तरीके की नई तकनीक सीखता रहे। तभी तो आज बोरविल में बच्चा गिरता है तो फौज को बुलाया जाता है, कहीं रेल एक्सीडेंट हो गया तो फौज को बुलाया जाता है, बाढ़ आ गई तो फौज को बुलाया जाता है। ये फौज के काम नहीं है, लेकिन देश को विश्वास है हमारी फौज पर कि देश का सैनिक आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी विश्वास को कायम रखने के लिए वो हर समय अपने आप को प्रशिक्षित करता रहता है, अपने आप को तैयार करता है और इस देश के विश्वास को बरकरार रखता है। तो हमें तो वो पहाड़ी को फतेह करते नीचे आए और अगला टास्क दे दिया गया टाइगर हिल। और टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी जिसने पूरे द्रास सेक्टर को डोमिनेट किया हुआ था। पूरे सेक्टर की हर गतिविधि के ऊपर उनकी नजरें थी और ऊपर से गोलाबारी उनकी बहुत भयंकर जारी थी।
उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको सिविल भाषा में कमांडो टीम और हमारी यूनिट की भाषा में उसको घातक प्लाटून कहते हैं। बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, नए जवानों का चयन शुरू हुआ। तो मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। मैं कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं, आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक आम बच्चा हूं, आम इंसान हूं। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम को जो टास्क मिला कि फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, उन 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, दिन भर दुश्मन की गोलाबारी को पार करते, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते, पूरा सामान वहां पर देकर के सुबह 2 घंटे में नीचे भी आते। उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस घातक कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी गई। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार उस पहाड़ी पर चढ़ने का हमें आदेश दे दिया गया। हाइट ज़्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था, वो दूर तक हमें देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। और मुझे ये कहते में कोई शर्म नहीं है कि बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। हमें मरना नहीं था, मारना था, इसलिए रात का सहारा लिया ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख सकें। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता। हिंदुस्तानियों के चेहरों के खून टपक रहा था, दुश्मन की भारी गोला बरस रही थी, लेकिन उन सब की परवाह नहीं करते हुए ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे। 2 रात और 1 दिन का सफर तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 26 साल हो गए, सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। हमने रस्सियों के सहारे उस पर चढ़ना शुरू किया, ऊपर से पत्थर गिरने लगे, पत्थरों की आवाज हमारी आहट से, दुश्मन शायद सो रहा होगा, दोनों तरफ उनके बंकर थे, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोल दिया और हमारी चढ़ने वाली टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। 21 जवानों में से केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो इस स्टेज के बराबर प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 7, लेकिन बिना डरे, बिना रुके, धैर्य और विश्वास के साथ हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद फिर ऐसी परिस्थिति, फिर ऐसे दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उनको देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगते इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। से मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के ऐसे लेट जाता। एक ही पल में दोनों साथी शहीद हो गए। एक साथी पीछे से दौड़ करके आया, जैसे वो नज़दीक पहुंचता है तो उनकी आर्टिलरी का एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं। मैं पड़ा हुआ देख रहा था, उस धड़ पर सर नहीं था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और वो सैनिक 2 कदम चला फिर जमीन पर गिर गया।
एक और साथी दौड़ करके पीछे से आया, एक और वहाँ पर बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके दूर जा करके गिरते हैं। जब ये शरीर के अंग कट करके ज़मीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते और तड़पते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी उनकी तरफ से मर गया। 35-40 पाकिस्तान के जवानों ने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। उनका एक कमांडर, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जरा इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारने लगी तो बॉडियां ऐसे उछलती थीं। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, फिर बाजू पैर में गोली मारता, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये सब कुछ पड़ा सहता रहा और देखता भी रहा। बहुत देर ये तांडव चलने के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला, इनके हथियार उठाओ और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर आप निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा तो साक्षात आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस 40 साल की अवस्था में 2 बार उस परमात्मा का दीदार करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। चुपचाप पड़ा रहा, दोबारा से गोलियां मारने लगे। जब वो नजदीक आया तब अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया। कमिटमेंट की पावर जानते हैं कितनी बड़ी है? महाभारत देखी होगी, महाभारत में पितामह भीष्म, जिन्होंने जीवन पर्यंत क्या किया था? कमिटमेंट किया था, प्रतिज्ञाएं की थी, और इन्हीं कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। आपने पढ़ा सुना देखा होगा कि अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीरों पर मारे थे कि रोम रोम बाणों से बिध गए थे, बाणों की सरसैया पे थे, अर्जुन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये ताकत होती है कमिटमेंट की। विकल्प बहुत मिलेंगे आपको जीवन से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आप संकल्प तो करके देखिए, आपकी शक्तियों का आपके अंतःकरण के अंदर संचार होने लगेगा और आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पड़ा रहा चुपचाप, गोलियां मारने लगे। उसने फिर बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया। उसके रुकते ही मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूं। अभी मन में वो विचार चल रहा था, तब तक तो वो वापस मुड़ते उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मैंने पढ़ा था किताब में बैटल ऑफ रजांगला, जहां मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 120 जवान चाइनीज सैनिकों के साथ युद्ध लड़ते रहे और 3000 से ज़्यादा चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा। 114 जवान वो शहीद हुए। और वो पता शहीद होने वाले जवानों का रिलेशन क्या था? पिता और पुत्र था, मामा और भांजा था, जीजा और साला था। जब विपत्ति आती है तो बाप अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन ये हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां बाप और बेटा एक साथ अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान होते हैं। तो ये ऐसी धरा है। शायद माँ भारती किसी न किसी को जरूर माध्यम चुनती है। मुझे शायद वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, जो वीरता, जो पराक्रम दिखाया, मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो उसने जब गोली चलाई सीने की तरफ, यहां पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचित हो गई। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं तो मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा वेपन उठा करके जा रहा होगा, तो शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं।
तब एक अंतःकरण से, अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा, तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने हैंड ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया। उस ग्रेनेड से उसका ये सर फटा, हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथ उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ की हड्डी पूरी निकल के बाहर थी। तो कंधा कंधा हिला, एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, फायर किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से जब फायर किया तब उनको ये आभास और एहसास हुआ कि यहाँ अकेला नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके पैर उखड़ के भाग खड़े हुए। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, क्योंकि पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, तो इस हाथ की हड्डी निकल के बाहर थी। लेकिन फिर भी हताश निराश नहीं हुआ, विश्वास और आस के साथ खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया। और 4-5 मीटर आगे जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। बहुत देर तक पड़ा हुआ उस मंजर को देखता रहा। फिर मन और मस्तिष्क में फिर एक पागलपन छाया, योगेंद्र नीचे जाना है, साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर इस हिम्मत को बटोरा, वापस चलने लगा तो टूटी हुई हड्डियां जब आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा तो ये हाथ बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। फिर खिसकता खिसकता अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, तो किसी का धड़ अलग था, तो किसी का सर अलग था। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं। जिधर नजरें उठती उधर पहाड़ और बर्फ के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप कभी जीवन में रोए होंगे, रोना कोई कायरता नहीं, रोना भी एक थेरेपी है। जैसे डांसिंग और लाफ्टर एक थेरेपी है, वैसे रोना भी एक थेरेपी है जो हमें अपने आप से जोड़ती है। और हम क्या हैं? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है, जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया है। तो मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट हुआ होगा वैसे ही उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया। और तुरंत एक आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया। फिर एकदम से गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मन में ख्याल आया, तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया है? नीचे की तरफ देखा तो मेरे साथी थे, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से उठा करके लेकर गए। जिस तरह आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई ग्रेनेड फटने के बाद उसके कपड़े चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। अपने साथियों को ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन दिया। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। मेरे कमांडिंग ऑफिसर तक सूचना पहुंची तो उन्होंने कहा इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाइए। साथियों, पहाड़ियों पर चढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल, और वो भी कैजुअलिटी को लेकर के। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होती जिस पे बिठा करके लिटा करके पीछे ले जाया जा सके। जवान कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ ला रहे। शाम हो गई थी, इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा, उन्होंने कहा बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा साहब मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बड़े सख्त थे, बोला पानी तो नहीं मिलेगा। तभी शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया। थोड़ा सा ग्लूकोज पीते ही थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। तब कहा कुछ बता सकता? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते कराते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में हूँ।
और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। अभी 4 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली इसलिए भी समझता हूँ कि मेरे साथ उस युद्ध में 527 माँ भारती के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनमें से 300 से ज़्यादा उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से मिलने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अपने मांग के सिंदूर को और अपने कोक को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया है। पता है, जब उनसे मुलाकात, एक जब सैनिक लास्ट अटैक के लिए चलता है, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि आज तो मोबाइल का ज़माना, उस समय लेटर का ज़माना है। तो कमांडर क्या कहता है, आखिरी लेटर लिख दो। अगर आपसे आज कहा जाए आखिरी कॉल कर दो, शायद नंबर नहीं बट दबेगा आपसे, लेकिन एक फौजी अपने घर के लिए लास्ट लेटर भी लिखता है। और क्या लिखता है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन ये दीवानों और मस्तानों का टोला जब शहादत की बेला की तरफ बढ़ता है, बड़ा हंसता और मुस्कुराता हुआ और अपने साथियों से पता क्या कहता है, यार अगर मैं मर गया तो एक बार मेरे घर जाना और मेरी बीवी से मिलना, मेरे बच्चों को देखना कि क्या कर रहे हैं, और मेरी बीवी से कहना मेरे मरने के बाद, उस समय 25 लाख रुपए मिल रहे थे, मेरे मरने के बाद जो 25 लाख रुपए मिलेंगे तो बीवी से कहना 15 लाख की एफडी मेरी बिटिया के नाम से कर देगी, ताकि जब वो शादी लायक हो तो किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। मैं 25 साल के बाद जब उनसे मिला तो किसी के 3 महीने का पेट में गर्भ था, तब उसने अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया। किसी के 1 साल का बच्चा था और एक ऐसी वीरांगना भी मिली जिसने कहा, यादव साहब जिस दिन मेरे घर आंगन मेरे पति की बॉडी आई थी उस दिन बिटिया को जन्म दिया था। समझ नहीं आता था कि बिटिया के जन्म की खुशी मनाऊं या पति के शहादत का गम मनाऊं। लेकिन एक ऐसी माँ भी मिली जिसने बड़े गर्व से कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था। जिस दिन 18 साल का हुआ उस दिन बेटे से कहा, जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। और 25 साल के बाद जिस जगह पर उसका पिता शहीद हुआ था, बेटा उस जगह पर एक सैनिक के रूप में खड़ा था और बड़े गर्व से नौजवानों के बीच कहा कि ये जो मेरी बहू बैठी है इसको कह रखा है, जिस दिन तेरा पति और मेरा बेटा शहीद हो गया उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता अपने बाप का बदला लेने जाएगा। ये हिंदुस्तान की माँ ही कह सकती हैं, क्योंकि ये माँ जब अपने बेटे और बेटियों को रण क्षेत्र में भेजती हैं तो विजय का तिलक लगा करके सिर्फ एक शब्द कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज हिंदुस्तान के ये जवान सीमा पर खड़े होकर के अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उस सैनिक के कफन तिरंगे को हटा करके देख लेना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं है। यही हमारी सेना और इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। ये वर्दी वाला ही फौजी नहीं होता, बिन वर्दी का भी एक सैनिक होता है। सैनिक मन, वचन और कर्म से होता है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में नेशन फर्स्ट, इस मूल मंत्र को अगर याद रखेंगे तो कभी जीवन में नकारात्मकता नहीं आएगी, जीवन में कभी व्यसन नहीं पैदा होंगे, हमेशा सकारात्मकता का भाव जागृत होगा और आप अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे। आप अपने राष्ट्र को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, किस स्तर पर देखना चाहते हैं, ये आपका प्रयास और आपकी कार्यशैली आपको बताएगी। क्योंकि पूरा दुनिया कहती है ना, भारत युवाओं का राष्ट्र है। सच में भारत युवाओं का राष्ट्र है। 65% भारत में युवा है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा शर्म भी महसूस होती है
कि इस 65% में से 80% युवा को ये पता नहीं है सूरज कितने बजे निकलता है। ये सच है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि इंस्टाग्राम रील का ज़माना आ गया। दिन भर रील बनाते हो, शाम को इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, रात को 2:30 बजे तक रील की लाइक चेक करते हैं। अगर रात को लाइक अच्छे नहीं आए तो रात को डिप्रेशन आ जाता है। 2:30 बजे आप सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? जीवन में सकारात्मकता कैसी आएगी? तो मैं आप इस रिपब्लिक टीवी के मंच से आप सब भारत के युवाओं को सिर्फ एक आह्वान और आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपनी जीवन की लाइफ स्टाइल बदल दीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दिन में अपने जो दिनचर्या है उसको सही से, जो आपको काम मिला उस कर्म को पूजा समझ करके, क्योंकि पूजा ही समर्पण है, समर्पण ही भक्ति और भक्ति ही शक्ति है। हमारी फौज का एक स्लोगन है, कर्म ही धर्म है। आप जिस कर्म को कर रहे हैं वही आपका धर्म है, उसी में आप अपने आप को डुबो दीजिए। रात को 10:30-11 बजे सो जाइए, सुबह 4:30 बजे उठ जाइए और उठ करके एक काम कर लीजिए सिर्फ, बस इस भारत माँ को अपने नतमस्तक होकर के नमन कर लीजिए। घर में कोई पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, थोड़ा सा योग कर लीजिए, आपकी भक्ति हो गई है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही आपके भगवान हैं। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते। जानते हैं आप दुनिया के बारे में जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? आप नहीं जानते हैं। सबको रटा हुआ 72, वो तो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है। 72 बार सांस लोगे तो 10 साल की भी उम्र नहीं होगी। हम 1 मिनट में औसतन व्यक्ति 15 से 17 बार सांस लेता है, तब हमारी औसतन आयु 65 से 70 वर्ष है। इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करो कि हम धरती पर क्यों आए, हमारा मकसद क्या है, और इस धरती पर पैदा हुए तो इस धरती के प्रति कर्तव्य क्या है। अधिकार मांगने के लिए आप बड़े जल्दी रोड पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने कर्तव्यों के बारे में भी खड़े होते हो कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को पूर्ण करूंगा, तब मेरा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बनेगा। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कह करके वाणी को विराम देता हूं। ये सांसों की लाइन ही है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। और युवाओं के लिए दुष्यंत कुमार ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में लगे या तेरे सीने में लगे, लेकिन ये राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम की आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। तो हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, everyday. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो, मिलाओ और खाओ। 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा, आर प्योर मसाला।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest... Viewers, now in the past 24 hours, Iran has claimed a series of major military and defense operations, including the destruction of 3 US KC-135 refueling aircraft and damage to at least 5 more in Al-Kharj Air Base in Saudi Arabia. Now, attacks on communication radars in Kuwait have also been reported. Strikes on US's landing craft at Al Sheikh port, targeted assaults on US positions in Bubia Island and Dubai. Now, also missile attacks on multiple sites across Tel Aviv and Haifa, and a cyber attack on the FBI director's emails reportedly carried out by the Hantala group. Now, all of this in the last 24 hours, Iran has claimed major responsibility of multiple strikes across Gulf, targeting US military assets and US intelligence assets in the Gulf region. Now, in the past 24 hours, Iran has claimed a series of major military operations. This includes the destruction of 3 US KC-135 refueling aircraft and damage to 5 others at the Al-Kharj Air Base in Saudi Arabia, the visuals of which are playing on your screens right now. In fact, attacks on communication radars in Kuwait have also been reported. Not just this, a cyber attack on the FBI director's emails has been reported as well. Viewers, now the war in West Asia has reached its 29th day, and Iran has issued a stern, blunt warning. Iran says that they will turn the entire Gulf region into a graveyard for American soldiers. Now, this comes from one of the spokespersons of the Khatm al-Anbiya, who said in a televised statement that
the region, the Gulf region, will be turned into a graveyard for US soldiers. Now, this comes after Israel struck Iran's nuclear power plant facility in Bushehr. However, no radioactive leakage was reported after the strikes, right after Iran vowed to retaliate, and in fact also struck a base in Saudi Arabia, wounding over a dozen US soldiers in the Saudi Arabia-US joint base. They've also managed to damage their high-value assets, including the KC-135 aircraft. And now, Iran's resolve remains clear. Iran has issued a stern warning. Their military says that they will turn the entire Gulf region into a graveyard for the American soldiers. Listen in to the Iranian military. Bismillahirrahmanirrahim. در ادامه موج 84م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصبا، محمد الاحمد و علی السالم منتقل شدند. تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده ادامه خواهد یافت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Viewers, now inside Israel, their rescue authorities have revealed that at least 7 people have been majorly wounded after strikes hit the Israeli territories. Now remember, this statement comes moments after the Houthi rebels took responsibility of striking various territories inside Israel. However, the Houthi rebel group maintained that they only struck military targets, but now Israeli rescue services say that at least 7 people have been wounded in an Iranian missile attack on a town in central Israel. That's the latest that we're getting in. Civilians once again paying the price for the war that's enraging in West Asia between Israel, Iran and the United States. Now, this happened after Houthi rebels have claimed responsibility of striking multiple targets deep inside Israeli territories, while they maintain that they only struck military targets. Now, Israeli rescue services have said that at least 7 people have been wounded in Iranian strikes in central Israel and the cities surrounding that area. Now, some from the impact of the explosion and others have been hurt while trying to run for shelter as the strikes rained down. Viewers, now getting in a big breaking development as Pakistan looks to mediate the West Asia tensions. A US congressional report has now stated that Pakistan continues to harbor and to shelter terror groups that are targeting India. Now, according to this US congressional research report, Jaish-e-Mohammed has around 500 armed supporters, while Hizbul Mujahideen maintains a cadre strength of nearly 1,500 terrorists inside the Pakistani territories. In fact, this report further notes that counter-terrorism operations have failed to completely dismantle these groups, which continue to operate right from the Pakistani soil. A big breaking development just when Pakistan is trying to mediate for peace talks. A US congressional research report now says that Pakistan, Islamabad, continues to harbor terror groups and terror camps that are continuing to harm India inside their soil. Now, as per the report, Jaish-e-Mohammed has around 500 armed supporters, while Hizbul Mujahideen maintains a cadre presence of nearly 1,500 terrorists in the Pakistani soil.
Now, viewers, the war in West Asia is not linear at all. While on one hand, US and Israel are acting as allies for Iran's rescue, various proxy groups, including Hezbollah, have been pitching in. But now there is a new turn to the war as Houthi rebels, Yemen's Houthi rebels, have also entered the war. They have issued a stark warning to the US and Israel, saying that if the aggressions against Iranian regime do not end, they will not hesitate in striking US and Israeli targets inside the Gulf region. Take a look at this. The West Asia conflict is widening and a new player has stepped in. The Houthis in Yemen, who have been backed by Iran for a long time, launched a barrage of ballistic missiles towards southern Israel. Sirens blaring across cities like Beersheba and near key strategic sites including sensitive zones. Israel says its air defense systems intercepted the threat. No casualties reported, but the message is loud and clear. This marks the Houthis' first direct strike on Israel since the US-Israel war began on Iran a month ago. The group has now openly declared its entry into the conflict, opening up a new front in the war. Houthi spokesperson Yahya Sari says ballistic missiles targeted key Israeli military sites and claims coordination with Iran and Hezbollah, further warning that strikes will continue till objectives are met. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين. Iran's deep ties with Houthis go beyond ideology. From weapon supply to intelligence support, Tehran has played a key role in strengthening the Houthi capabilities in Yemen. The alliance also extends to strategy and politics, with Iran backing the Houthis diplomatically and recognizing their authority in Yemen. And now the Houthis have also signaled possible escalation at sea, with threats to key global shipping routes. The number of players in the Middle East conflict is only increasing with the Houthis stepping in. The war is now nearing 1 month and Tehran remains firm in its intention to face the US threat head-on. With militia groups active across Iraq, the Hezbollah in Lebanon, and now the Houthis in Yemen up in arms, the scale of attacks can only be expected to increase. Viewers, that's all that we could wrap in this edition of The World at War. But don't go anywhere. On the other side, UAE air defenses have successfully intercepted 20 ballistic missiles and 37 unarmed vehicles launched from Iran. We're getting you all the details and breakdown on that story right after this short break. Stay tuned to Republic TV. Co-powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र. थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात. वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप. MDH का जल जीरा, जीरा सिप. जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा. MDH. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, मतवाला
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Namaste. Let's begin with Vande Mataram. I'm just wishing you Vande Mataram. It's the 150th year of our national song, and something which we all should feel very proud about. The reason I'm not very comfortable talking about media, because then a whole lot of truths need to be told, and then a whole lot of friends
get upset about that. But the whole narrative of what constitutes nationalism in our context, it needs to be looked at. And from that, we should extrapolate why the media should be a part of that narrative. The idea of nationalism is not something which we just want to make into an exclusive zone where there's no entry for others. And to make it broad-based, to democratize it, to take it to the people, we need the media, and therefore the media narrative becomes important. The problem really begins sometime around 1970s and 80s, when the left collaborated very heavily with the Congress, which by then was losing out on the ideological front, and it used the left to prop up its diminishing ideological appeal. That nationalism started, it started being projected as a dirty word, as something which we shouldn't really be proud about and we shouldn't really be talking about. And a whole lot of reasons were given that nationalism narrows down you to just one identity. It denies space for those who may not be part of that one identity. And that ultimately nationalism is something which leads to conflict both within the nation and among nations. Now that is the most spurious argument. It's as spurious as people quoting Tagore's essay on nationalism, in which he was quite vituperative and rejected the idea of nationalism. But what people don't tell you is that Tagore wrote that essay after the First World War, which was essentially a war triggered by European nationalism. Europe never had permanent nation states. They were all Westphalian states that had fluid borders and therefore fluid identities. And the First World War and subsequently the Second World War was essentially a contestation between those identities, and as I said, the fluid borders. Yes, European nationalism, if you look at it, it's exclusionary. It will not embrace others as part of themselves. For instance, Hitler's Germany never accepted anybody else in Europe as part of the German concept. Unlike that, Indian nationalism essentially stems from our identity as a civilizational state, as a civilizational nation. We are not a Westphalian state. We are not just a landmass which was made into a nation. We are historically a civilizational entity. We have a civilization that dates back 5,000 years or more. And we are among the few countries in the world who can claim a civilizational tag. And therefore, our identity and our concept of nationalism is inclusive. It is definitely based on our identity as Indians. But while we assert that identity, we also assimilate, we also gather people into our community. Now, if you look at it historically, India has never gone to war with any other country to expand its territory. On the other hand, others have come into India to expand their own ambitions of power. But we will not go into that. That's a different subject altogether. But communities have come, I mean, the Jews came to India, the Christians came to India, the Parsis came to India.
and we assimilated them in our own larger family. We have also assimilated Muslims into our larger family, although the origin of the Muslim identity in India may not be a very happy one, and it's a history written in blood. It's very strange that, every time you talk about nationalism, people will pipe up and say, I would rather be a patriot than a nationalist. But what does being a patriot mean? And how is it different from being a nationalist? A patriot would say that I love my country, yes, but my country is not above criticism, my country is not above abuse, my country is not above mocking, etc. A nationalist, on the other hand, will say that for me, the nation comes above everything else. It's Rashtra Sarvopari, and everything else is secondary to that. And this, in a sense, also binds us together as a people. If you look at the vast expanse of India, geographically, culturally, physically, politically, socially, linguistically, there has to be something which binds us together. Even Nehru, who was not very comfortable with the idea of nation and nationalism, had to concede that there's a silken thread which binds us together. And that silken thread is our identity as Indians, our identity as a civilizational people. We are not a people who were founded out of an artificially created state. We are not a people who can sort of date back our past to only 100 years, 200 years, or 300 years. Lastly, I would like to bring in why it is important that we celebrate our icons, our national icons, and make them a part of our national life. As I said, it's the 150th year of Vande Mataram, and the government, as you would know, has made the entire song now the national song. And while it may not be easy for all of us to sort of sing that song or to get used to the idea of singing that song, but think in terms of future generations. For them, it will come easy. It will also come naturally. Similarly, at some point, I hope the entire national anthem or the song from which the national anthem has been excerpted, it should be introduced in its fullness. The argument that it becomes very long doesn't hold. If you should listen to the national anthem of Sri Lanka, it's pretty long. You should listen to the national anthem of Bangladesh, again, it's very long. And the whole idea that it should be a very brief song is again a very Western concept, because they have nothing to say for their own nations and their own national identity. Therefore, they make their national anthem into just one stanza or half a stanza. Now, where does media come into all this? Politicians practicing nationalism, or some of them practicing anti-nationalism, and anti-nationalism I mean in a wider context, not in the narrow concept of working against the nation. They have their own zones, they have their own areas, let that be. But we have to bring people into the fold. People have to become more and more aware of the need to see their identity as something unique, something globally unique, and therefore to be proud of it, and also to be proud of the entity that gives them their identity, that is their nation. The media has to be convinced, either willingly or unwillingly,
that to work in the interest of the nation is in the interest of the larger public good. To constantly question the nation, to constantly berate the nation, to constantly mock the nation does no good to anybody. The speaker before me was recounting his experiences as an officer in uniform. There was a time when the uniform, whether it is the Army, the Air Force, or the Navy, or even the Central Forces, they were treated with utmost respect, and it would be considered a blasphemy to criticize them or to call into question their intent, their work, etc. But in the last few years, what we have seen is that people whose own contribution to the national life, whose own contribution to the nation in terms of building the country is questionable and possibly non-existent, they have become the biggest critiques of those in uniform. Why? You have a Kanhaiya Kumar who very blithely says that this is what the army does in Kashmir. How does he know? Had he ever visited Kashmir to find out what the army is doing over there? He hadn't. We have a tax-funded, a university which you and I fund with our taxes, where after a particularly major massacre of our security forces in Chhattisgarh, I think it was the Sukma massacre, that students came out to celebrate it. And perchance a uniformed person, a soldier in the army who had gone to visit somebody in the campus, he found himself caught in the quote-unquote celebrations, and the amount of humiliation he had to suffer and physical injury he had to suffer is unthinkable, yet nothing happens to them. We have a situation where a man who publicly, and he's not some illiterate, he's not some illiterate person, somebody who's ill-informed. He's an IIT graduate doing postgraduate from JNU. He calls for cutting off India's chicken's neck. That is the point which joins India to the rest of the Northeast. And he makes a public statement on how this can be done. He is arrested because subsequently it was found he was also involved in organizing the Delhi riots. He is arrested. He is denied bail, consistently denied bail. He is under trial right now. And then he gets a 10 days interim bail to go attend his younger brother's wedding celebrations. And what sort of a country are we? Which half-decent country would allow this? This is not about humanity. This is about normalizing people who have little respect for humanity. I could keep on giving you example after example. You have teachers who are again tax funded, but they work against the national interest. In such a situation, it becomes doubly important for media to step up to the plate and insist that come what may, the national interest comes first. And I am not conflating the national interest with any one political ideology. I am not conflating the national interest with any one government, but I look at national interest as anything that is in the interest of India. Whatever. It is not for us to take a moral position, an ethical position in terms of dealing with conflicts around the world, in terms of alliances and partnerships. No. Everything has to be seen from the prism of national interest. And hence, it's a good idea to move away from long-term alliances which ultimately
erode our national interest and superimpose on us others' interest. And we are moving towards that direction, and I think it's a great idea that to have transactional relations instead of long-term quote-unquote friendships that do not carry us forward. It is actually important to note that the media in our country has also changed over the last 10 years. Whether they have done so happily or unhappily, but they have changed. And they would not easily work against the national interest as they would have, say, 10 years ago or 15 years ago. They would not run down India on global platforms, and media as a whole, I think, continues to project India on the global stage, which is good, and it also continues to project the India story which is happening now and which everybody is interested in. Thanks. Namaste. Co-powered by Century Ply Club Prime. Raho befikar. आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा मसाला। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life.
I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why? We had really good meetings. I mean, obviously it was an opportunity to talk to our allies on the G7 and outline the perspective of what we have going on with Iran. In particular, we talked about a lot of things, but obviously in the Iran operation. And we're very clear, as we've been from the very beginning, the objectives of this mission have been clear from the very first night the President announced it. We're going to destroy Iran's Navy. We've destroyed their Air Force. We're going to basically destroy their ability to make missiles and drones in their factories. The US wants a global plan to keep the Strait of Hormuz open after the strikes end. Marco Rubio said it was an opportunity to talk to their allies on the G7 and have a perspective of what has been going on with Iran in particular. These countries have a lot at stake, not just the G7 countries, but countries in Asia and all over the world have a lot at stake and should contribute greatly to that effort to ensure that neither the Straits of Hormuz or frankly any international waterways should ever be something that's controlled or told by a nation state or by a terroristic government like the one that exists in Iran today in that radical clerical regime. So there seemed to be a lot of buy-in to that concept. There's a lot of work happening right now. The UK has played a prominent role in bringing that together, but other countries as well. And there seems to be a lot of acceptance of all that. And our allies and partners here, at least to me, seem to be appreciative of updates on our operation and an understanding of what lies ahead over the next few weeks. Rubio highlighted the core mission of the US was to destroy Iran's ability to produce missiles and drones in order to stop them from threatening the world. He also said that the US is ahead of its schedule in the operation and most likely will come up with its completion in a matter of weeks. In another round of conversation, Rubio said that it's illegal, unacceptable, and dangerous to set up a tolling system in the Strait of Hormuz. Japan has reportedly paid around $2 million per oil tanker to Iran to pass through the Strait of Hormuz amid rising regional tensions. What began as a military standoff is now evolving into a controlled, fee-based access system, with Iran tightening its grip over one of the world's most critical shipping routes. The US Secretary of State highlighted that not just the G7 nations, but no nation in the world should have to pay in international waters. Immediately after this thing ends, we're done with our objectives, one of the immediate challenges we're going to face is an Iran that may decide that they want to set up a tolling system in the Straits of Hormuz. Not only is this illegal, it's unacceptable, it's dangerous to the world, and it's important that the world have a plan to confront it. The United States is prepared to be a part of that plan. We don't have to lead that plan, but we're happy to be a part of it. He also underscored UK's prominent role in the Middle East security, while urging European allies to step up in Iran-related maritime security in the last week. Co-powered by Century Ply Club Prime. Raho befikar. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MDH का जल जीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है, स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। These talks go well and you reach a ceasefire agreement with Iran. Do you believe Israel would abide by that agreement? I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is... From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Hello and a very
very warm welcome. You're watching Republic TV. I'm Gesu Bharadwaj. Now, viewers, talking about West Asia and the Strait of Hormuz. Now, Iran has started levying heavy taxes on the shipments that are crossing the contentious strait. And on the other side, US State of Secretary Marco Rubio says that this is completely illegal and will disrupt trade and shipment through the crucial waterway. We're getting you all the details. But first, here's a check on your headlines for the hour. Take a look. Just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. Another shocking remark from Donald Trump humiliates Saudi Crown Prince in his address and says Gulf nation leaders better obey him. West Asia war escalates. Houthis now enter the war with missile strikes against Israel. Fresh US strikes on Iran's Bushehr nuclear plant raise fears of a radiological disaster. साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है. Prime Minister Modi addresses the West Asia war, says India is resilient while other nations are reeling under the war's impact. Viewers, now starting first with a breaking development that's coming in. USS Central Command has now issued a statement along with the satellite footage saying that for yesteryears now Iranian naval capacity has been threatening the waters in West Asia, but now that time is over. They say that Iranian naval vessels have threatened and harassed global shipping in regional waters, but those days are now over. A statement that inches close to a remarkable escalation that's ongoing in West Asia now. USS Central Command, their military says, and I'm quoting, that for decades Iranian naval vessels have threatened and even harassed global shipping routes in regional waters, but now that day, those days are over. This is in fact the footage that they have released alongside the tightening message against the Iranian naval capabilities in the waters of West Asia as the war rages on. Now, viewers, these are the visuals on your screens. You can see the CENTCOM has released satellite images. Now, potentially, this shows an Iranian naval vessel being completely destroyed, obliterated by a joint US-Israeli strikes. Now, that missile hits the ship and it completely changes into plumes of smoke. Now, CENTCOM, along with publishing this footage, has said that now the era of Iranian naval threat in the West Asia waters over ships and vessels is going to end. And a message that makes it clear that the war is not eyeing any slowdown and it is only inching closer and closer to a wider escalation. Viewers, now the tensions in West Asia continue to escalate as Israel has struck multiple nuclear sites in Iran, targeting key plutonium and uranium facilities, while the United States maintains a growing military presence in the region. Now, officials have also warned that repeated attacks, particularly near the Bushehr nuclear plant in Iran, raise the risk of a radiological disaster, drawing sharp condemnation from Tehran and concerns from the International Atomic Energy Agency, with President Trump now citing a pause in certain operations but keeping pressure up on Tehran. Analysts suggest that the coming days will be critical in determining whether the situation intensifies or de-escalates in West Asia. Take a look. In the ongoing West Asia war, US-Israel allies have once again targeted energy infrastructure. Fresh strikes on Bushehr nuclear plant are furthering concerns of a radiological disaster. The International Atomic Energy Agency has expressed deep concern, warning that any damage to nuclear facilities could lead to a major nuclear accident.
Iran, on the other hand, condemns the strikes as a violation of the international law and calls them a threat to regional security. This is not a one-off incident. Before this, Israel struck Iran's Arak nuclear complex, a key plutonium production site for nuclear weapons. Further, to dismantle Iran's nuclear capabilities, Israel struck a uranium production plant in Yazd Strike and Iran's Bushehr nuclear plant. A pattern to dismantle Iran's nuclear enrichment program that comes with warnings of nuclear blackmailing. As you know, we're gathered at a moment of bold action and historic decision to make America and our allies safer and stronger, more prosperous, more successful than ever before. That's what's happening. Tonight, we're closer than ever to the rise of the Middle East that is finally free at last from Iranian terror, aggression, and nuclear blackmail. That's what's happened. It was nuclear blackmail for years and years, and beyond that. With the war escalating and President Trump claiming a pause on certain military actions, even as the US builds up troop presence and pressure on Iran, it remains to be seen how the upcoming days will unfold. Viewers, getting in another breaking development that comes, a statement that has been released by the US where they say that the situation at the Bushehr nuclear power plant in Iran is only deteriorating after another strike hit the nuclear power plant facility deep inside the Iranian territories. Now, that's a big claim that's being made by the US, where it says that the Bushehr nuclear power plant continues to deteriorate after another attack occurred around it. Now, remember, the Bushehr power plant has already come under attacks at least thrice, and this is the fourth suggested attack that the US is speaking about, where they say that the situation, the condition of this nuclear power plant in Bushehr in Iran continues to deteriorate by the day as each attack hits the nuclear facility. Now remember, the International Agency, Atomic Agency, has taken full cognizance of all these strikes. They have said that there are no radiological leaks that have occurred until now, but they have constantly been warning of a major nuclear disaster in case the strikes and counter-strikes in the war that's ongoing between Iran, Israel and the United States do not stop targeting energy infrastructure and especially nuclear-powered energy infrastructure. These are the visuals of the periphery of the Bushehr nuclear power plant inside Iran that has been struck for the fourth time. Now, US says that the situation is worsening and the condition of the power plant is deteriorating. Also comes when the Iranian media actually claimed that the Bushehr nuclear power plant facility is completely intact and only the premises have been hit. Even the Atomic Agency internationally says that no leaks have been reported, no radiological leaks have been reported so far, but US on the other hand claims that the situation is worsening for the energy infrastructure in Bushehr. Now we were shifting focus to another breaking development that comes from Israel. At least 7 people were lightly wounded in a missile attack on a central Israeli town. Now some were wounded by the blast. Meanwhile, others were wounded while they were trying to run and take shelter. Now Megan David Adams says that there's in fact also footage that shows massive damage that's been taken by a local house. Now Houthis have taken responsibility of striking Israel just a few hours ago. Houthi rebels from Yemen, a proxy that's standing shoulder to shoulder with Iran in the war. In fact, they also warned that they will enter the war in case the aggression against Iran does not go down. And now attacks continue on civilian infrastructure as well. Now inside Israel, at least 7 people have been wounded. In fact, those are the visuals of the emergency services, first responders scrambling. This is a local house in central Israel that has been completely damaged, roof completely blown off by missile strikes that were rained down. Now Houthis have taken full responsibility of the strikes that have hit central Israel and its surrounding areas just a few hours ago.
Viewers, getting in another breaking development. The Iranian forces have struck UAE with about 20 ballistic missiles and 37 drones. At least 20 Iranian ballistic missiles and 37 UAV drones have targeted the UAE airspace. Now, the country's defense ministry has given these numbers, and they also say that all of these missiles have been intercepted. Now, these attacks bring the total number of ballistic missiles launched at UAE to 398, a staggering number that includes 15 cruise missiles and over 1,800 drones since the start of the war and its escalations on the 28th of February. Now, overall, these launches have caused deaths of at least 2 members of the UAE armed forces. A Moroccan civilian was also contracted by the armed forces, and 8 people of Pakistani, Nepali, Bangladeshi and Palestinian and Indian descent have also been killed. At least 178 people have been injured in UAE since the beginning of the escalations. Now, this comes just as UAE Air Defense has now intercepted 20 ballistic missiles and 37 drones that were fired by the Iranian military. Now, these are the visuals on your screens of the interception happening. These are the footage that was taken in real time as the interception happened. In fact, 178 people inside UAE have been injured till now since the beginning of the conflict. Now, remember, the war has spread to the larger Gulf region, and now UAE defense forces say that 20 Iranian ballistic missiles and 37 unarmed vehicle drones have been intercepted by the UAE air defense systems. Now, first responders continuously working to keep the situation under control, and as UAE has been hit, at least 2 members of the armed forces have been killed. Not just that, 8 people from across different countries, including Pakistan, Nepal, India, Bangladesh, and even Palestine, have been killed in UAE. These are the visuals of the missiles and drones, the 20 ballistic missiles that were intercepted by UAE's air defense. At least 178 people have been injured since the beginning of the war just inside UAE. Now, viewers, US President Donald Trump has been making long claims. He's in fact also coming after global leaders, not just that, specifically targeting Gulf leaders. And this time around, he has targeted Saudi's crown prince. He says that they have to, all of the leaders in Gulf must obey what Trump has been saying. Now, remember, this comes after a war that was waged by US and Israel and has now put the entire Gulf out of balance. And even then, US President goes on and tears into the Saudi crown prince and says that all leaders across the Gulf nations must obey Trump's order. Listen into his remarks. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. US President Donald Trump, in his address in an investment summit in Florida, made explicitly shocking remarks. Trump made tall claims about himself while mocking other leaders. On Pakistan, the US president confessed a strategic preference for losers, noting that their presence provides a significant boost to his own self-esteem, while also expressing a distaste for people more successful than him. You know, I've watched a lot of people, leaders, great leaders. And, you know, the one thing about sports is you break it down into, you know, a 2-hour period, something nice. You don't have to wait a lifetime to find out if somebody a winner or a loser. You got a lot of losers, mostly losers, fortunately. It's a good thing to have a lot of losers. I always like to hang around with losers, actually, because it makes me feel better. I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories. I like people that like to listen to my success. In a shocking claim, Trump made explicit remarks about the future king of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be.
But it was really something. He said, though, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half, it was 6 months ago, but a year ago, you were a dead country. Now you're literally the hottest country anywhere in the world. And that was before we beat the hell out of them. He made a gap about the Strait of Hormuz and called it the Strait of Trump, while maintaining there are no accidents, with him admitting that the slip of tongue was intentional. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. If there were, we'd have a major story. In a statement, the president announced the immediate annexation of the Gulf of Mexico and rebranding it the Gulf of America, while also claiming that Cuba is next. You wouldn't have to use it. I built this great military. I said, you'll never have to use it, but sometimes you have to use it. And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Trump also addressed the Nobel Prize snub, saying the committee has lost credibility, claiming he saved 50 million people and stopped 8 wars. As the war in West Asia reaches a 1-month mark, Trump continues to say he is a peacemaker. Well, I'll tell you what. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. Some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. The latest statements from Trump raise concern whether these remarks are calculated power plays or intentional provocations as the global community suffers from the consequences of the war in West Asia. Viewers, now getting in another breaking development as the UN Human Rights Council took up a debate that was called in for by Iran, Cuba and China, where Chinese envoy has raked up the Minab school entire thing that unfolded, where 168 schoolgirls were killed by joint US-Israeli strikes. Now, a Chinese envoy condemned the US-Israeli strikes on the girls' elementary school in Iran's Minab. These are the visuals. Now, remember, this was done. At least 3 strikes by US's Tomahawk missile rained down on an elementary school inside Iran, killing 168 schoolgirls aged just 7 to 12 years old. And now a Chinese envoy has condemned this attack on the Minab girls' school, which claimed the lives of 168 schoolgirls. Now, they've called the strikes a violation of human morality. Now, this happened just yesterday at the UN Human Rights Council during an urgent debate that was requested by Iran, China and Cuba. Now, Ambassador Jia Guide outlined China's position, condemned the strike on the Minab elementary school that killed 168 schoolgirls, and also called the joint US-Israeli strikes on the school a violation of human morality. As the cost of the war in terms of civilian casualties rises up, Chinese envoy has now condemned the US-Israeli strike on civilian areas, especially highlighting the Minab strike, which claimed the lives of 168 schoolgirls in Minab in Iran. They've called it a violation of human morality. Those are the visuals of the graves on your screens.
Now also being joined by retired Major General A.K. Sivach to get us more updates onto the matter. So thank you very much for speaking to Republic. You know, on one hand, where US continues saying that there is a peace deal, there is a truce on the papers, and that's going to happen, they continue to batter Iran, and likewise, Iranian regime also continues to batter the rest of the Gulf region. But now what's unfolding in the UN Human Rights Convention is the Chinese envoy now condemning the Israeli-US strikes that hit an elementary girls' school inside Iran. How do you read this entire situation? In dialogue, there is a truce, but on ground, nothing changes. No doubt. As far as this war is there, it will not finish it off so fast. The war is going on. In fact, the intensity is increasing as well as the scope is increasing. Now, if you see it that basically US and Israel underestimated the capability of Iran. They thought that if they kill Ayatollah al-Khamenei and his top military commander, political commander, the Iran will come to its knees and it will not able to fight for long. But that has not happened because Iran was well prepared. They have made a mosaic defense system. By wing, they have a succession plan up till 4 stages, and they have decentralized their power, given to the IRGC, divided the whole country in 31 provinces. Yeah. So nothing has changed. And in fact, if you carry out the SWOT analysis of Iran, that strength, weakness, opportunity, threat, they have a weakness. They don't have a very good air defense. Their air power is not there. The navy is quite small. But their strength is their missile rockets, which are almost about 8 to 10,000. They have got drones up to almost 1 lakh. So the point is that Iran is not counting down. Iran is responding with might, and Iran has surprised the whole world. And Iran has made this war into asymmetric and hybrid warfare. And very cleverly, it has changed the military war into military economic war by basically blocking the Strait of Hormuz and also striking on these countries where there are military bases of US. So the point is now, though there is a sort of a talks which is going on, one can understand as to how things are going. As far as the US is concerned, it has not able to achieve any its military objective. And today, Donald Trump wants an honorable exit because his popularity is going down in US. There are midterm elections in November. He wants to show that as if he has won the war and he wants to come out of it. But the point is that Israel does not want to come out of the war. Israel wants to continue till the time Iran becomes much weaker. As far as Iran is concerned, Iran also do not have unlimited resources. It will like to come out, but today he is in a better position to basically negotiate because he is not backing down, he is hitting hard, and he is relevant. You see, Iran doesn't have to be victorious. The fact Iran remains relevant, it's a victory by itself. So the point is the churning effect taking place. Now, as US is concerned, it has already given 10 days. Up till 7th April, it is not going to hit on the power sector of Iran. But what having said so, now can there be a peace? The point comes in, this mediation is a tricky issue. Definitely. To meet. To me, it looks like one point. To me, it looks like at once way US is trying to have a truce, but at the same time preparing to attack on Kraut because he's already moving 82 Air Division as well as a Marine Commandos, and he's Major General Sivach, yes. So also borrowing from the point that you just raised, an important one. You know, the nuclear facilities, Donald Trump very ironically saying that we're pausing all strikes on their energy facilities, Iran being in question. He in fact also extended this pause. But just today, the Bushehr nuclear facility was also struck by Israeli forces. Now, does this suggest a deep divide on the war's narrative when it comes to the US and Israel? Because it looks like they are allies, but they are acting on their own accords. They are not on the same page. The objective and aim of US and Israel are two different. As far as Israel is concerned, it wants to continue the war. It wants to hit the nuclear facility of Iran. It also wants to hit the energy sector of Iran. It wants to make Iran as weak as feasible because they feel that this is an opportunity which they have got it, that Iran, of course, have got a lot of beating. They have almost 70% of major cities have been destroyed. But at the same time, the US doesn't have that. US want to have honorable exit. US is not hitting the energy sector of Iran, but
as far as Israel is concerned, it is hitting, and Iran is also hitting. If you remember that Dimona, as well as an Arad, that is basically a nuclear plant which is very close to Dimona, it was also hit. And not only that, Iran has also displayed by firing a missile as long as Croatia, about 4,000 kilometers, which has surprised everyone. No one thought that they have missile more than 2,000 kilometers. It means they can hit. Yeah. So the point is very rightly brought out. The US and Israel, though are the contemporary fighting together, but they are not on the same page. Their aims and objectives are different. And Israel is not following what America is telling. They are doing what they think is in their national interest. Remember, there are two other actors which have come into this war. One is Hezbollah, which is attacking from the southern. Have fired a missile in the southern part of Israel. So the whole situation is, instead of coming in under control, it is deteriorating. And the scope of this war is enlarging. Right, sir. Major General A.K. Siwach, always a pleasure to have you on Republic. Thank you for giving us such a detailed analysis of what's ongoing in West Asia. For now, viewers, now shifting focus, at least 10 US troops have been wounded in Iranian strikes that hit a Saudi Arabia air base. Now, remember, this comes after Iran retaliated and struck the Saudi Arabia base. The Prince Sultan Air Base was struck and over 24 US soldiers have been injured in a single strike. Not just that, take a look on the visuals on your screens. Their refueling aircraft, their high-value asset aircrafts have also been destroyed by the Iranian strikes that were rained down on the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. Now remember, this air base is operated by Saudi Arabia's Air Force, but also houses US troops, the US Air Force in heavy numbers. In fact, their TASMACs, their hangars are present in the Saudi Arabia Prince Sultan Air Base, and over a dozen US troops were wounded in one single Iranian strike on the Saudi Arabia Prince Sultan Air Base, which also damaged at least 2 Air Force refueling aircraft and underscored that despite weeks of strikes, Iran still poses a significant threat to US bases across the Gulf region. Over a dozen US troops wounded in just one strike. These are the visuals of their aircraft being destroyed. Multiple aircrafts that were struck in a single attack by the Iranian military. Now, that's the latest that we're picking up. Iran fired about 6 ballistic missiles and 29 drones at the Prince Sultan Air Base, damaging the entire facility. Viewers, now on the other side, as the West Asia war escalates, Yemen's Houthis have entered the war with missile strikes and a warning against Israel and the US military bases in Gulf. Getting you all the details of how the war is unfolding after the short break. Stay tuned to Republic TV. Powered by Century Ply Club Prime. Raho befikar. थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा। Amity has been ranked among the top universities globally for producing the most employable graduates by the Times Higher Education UK. Yet another testimony to Amity's excellent placement record. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें
हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। Hi there, welcome back to your favorite deep dive show on stories contemporary and consequential for India. We return after a brief hiatus due to the ongoing war in West Asia. In terms of sheer number of countries directly hit by bombs or missiles, this is perhaps the most global war after the World War II. While the news wheel was heavy with all the action and reaction from the war zone, I noted something interesting away from the headlines. The use of religion as a justification for this war. In the case of the Americans, it was overt, almost sounded like the Crusades. In the case of others, it was subterranean, but equally strong. It's a Zionist war, it's a Shia-Sunni war, it's a Christian crusade, all rolled into one. Stay with me for going deeper in segment 1. Second, we go to Nepal as it gets a generational shift in its government. After decades of gerontocracy that got thrown out during the Gen Z protests last year, would Balen, the new Prime Minister, get the rap right for the people of Nepal? Let's get going. A year and a half from now, the capabilities they would have to inflict damage on us, it's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. The Ayatollah was a radical cleric. That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. This was United States Secretary of State Marco Rubio in a press conference a day before the Iran war started on February 28. According to this justification, Iran was led by a bunch of religious fanatics, lunatics, ayatollahs who run their country on theology which is apocalyptic and has to be taken seriously and taken down. Let's listen to him again. And strike and strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. Oops, a wrong video got plugged in. But aren't you curious what was that? That was Paula White, spiritual advisor to President Donald J. Trump. Listen to her again, now in full. And strike and strike and strike and strike and strike and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka
ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Fika hata anda ata. Ora bata rata ande eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. 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 This right now, we just ask right now that you weaken it. You said you would weaken it and bring it to naught. That you would bring evil upon it. Let whatever entity has yielded itself for this spirit to invade in this last moment as an attempt to hijack the plan of God, to hijack the will of God, to hijack what God has already established in the earth. Let it be broken right now. Victory is coming. Angels are coming from Africa and South America. That's what she says as she's seen ratcheting up a trance, even as a guy in the background walks seemingly unconcerned. I hope the angels Paula is eliciting support of are not crossing the border illegally, or Tom Homan would catch them. But Paula White is essentially praying for victory of the United States in this war, in this video. But guess what? This was not the pinnacle of religious symbolism requisitioned in support of the Iran war. That came from Secretary of War Pete Hegseth, who has institutionalized religious imagery right inside the Pentagon through his monthly prayer service meetings. Listen to this one from this week. First, a reading from the book of Psalms, chapter 18, verses 37 to 42. King David writes, I pursued my enemies and overtook them, and did not turn back till they were consumed. I thrust them through so that they were not able to rise. They fell under my feet. For you equipped me with strength for the battle. You made those who rise against me sink under me. You made my enemies turn their backs to me, and those who hated me I destroyed. They cried for help, but there was none to save. They cried to the Lord, but he did not answer them. I beat them fine as dust before the wind. I cast them out like the mire of the streets. Almighty God, who trains our hands for war and our fingers for battle, you who stirred the nations from the north against Babylon of old, making her land a desolation where none dwell. Behold now the wicked who rise against your justice and the peace of the righteous. Snap the rod of the oppressor, frustrate the wicked plans, and break the teeth of the ungodly. By the blast of your anger, let the evil perish. Let their bulls go down to slaughter, for their day has come, the time of their punishment. Pour out your wrath upon those who plot vain things and blow them away like chaff before the wind. Grant this task force clear and righteous targets for violence. Surround them as a shield. Protect the innocent and blameless in their midst. Make their arrows like those of a skilled warrior who returned not empty-handed. Let every round find its mark against the enemies of righteousness and our great nation. Give them wisdom in every decision for them. For the wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. We ask these things with bold confidence in the mighty and powerful name of Jesus Christ, King over all kings, and amen. Whatever Rubio said about religious fanatics running the show in America, Iran, this Christian moral underpinning suggesting that this war is divinely sanctioned got an immediate rebuttal from the top man of God in the Christendom. Pope Leo XIV did not like what Hegseth has been up to. On hearing that the American Defense Secretary had enlisted the support of God and suggested that the war with Iran was protected by God, the Pope issued a sharp rebuke. Speaking to a parish in Rome, he said, and I quote, "Someone presumes to involve the name of God in choices of death, but God cannot be enlisted by darkness," unquote. It was a strong one. The high priest of Christianity did not stop there. In fact, through his statements and posts on social media, Leo XIV broadened the scope of his intervention like no other pope in recent history on war.
In the last 25 days, he has condemned the Minabi school attack, hectored those conservative politicians backing the war to go and submit themselves to a confession box, called for a permanent ban on aerial bombing, expressed dismay at the war continuing, and repeatedly called for an immediate ceasefire, even giving camera sound bites like this one, in which he's saying, work for peace with dialogue, not weapons. Are you confident in a peace deal? Buonasera, solo voglio dire una parola. Buonasera a tutti e grazie per il vostro lavoro. Voglio rinnovare l'appello per il cessato di fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza è sempre peggio, più di 1 milione di sfolati, tanti morti. Vogliamo pregare per la pace, ma invito tutte le autorità a lavorare veramente con il dialogo a risolvere i problemi. Interestingly, as we all know, Pope Leo is the first American pope. We did an entire episode profiling him last year. So I bring my attention back to the crusade-like zeal shown by Trump team. Hegseth, in fact, authored a book called American Crusade in 2020, in which he justified the medieval crusades as the savior of the Christian civilization from the onslaught of Islam. But for the crusades, there would have been no Protestant Reformation or Renaissance. There would have been no Europe and no America. That's the theme of the book. A tattoo on his right biceps has Deus Vult, or God wills it, written along with the image of a cross. Hegseth has framed US military operations as bigger than politics or foreign policy. That fits in nicely with the deep end of the conservative mega constituency that has been central to President Trump's movement. Like in his inauguration speech, Trump mentioned how God saved him to make America great again. It was a reference to the Butler County assassination attempt on him. Just last month, we had Marco Rubio at the Munich Security Conference saying America and Europe were bonded together as civilizations by the Christian faith. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. Does that make the Iran war a Christian versus Muslim war? The Iranians have been using religious imagery in equal measure. But then Iran is a theocracy. So is Israel a Jewish state. The name of Operation Roaring Lion draws from the book of Genesis in the Bible, where Judah is described as a lion, symbolizing supremacy of the tribe of Judah, or the Jews. A lion is also the official emblem of the city of Jerusalem. What of the countries from Kuwait to Qatar, from Bahrain to Oman? Is it all secular cause for them? Perhaps not, actually not. The reason why the shibboleths of a Muslim Ummah have crashed in this war is because Iran is a Shia power, and the Gulf countries are all Sunni. The mask of Muslim unity that was sought to be created by the formation of the OIC, or the Organization of Islamic Conference, has come off. The Shia-Sunni conflict is so acerbic that reports after reports have suggested how this is not Israel's war, but of Saudi Arabia. Benjamin Netanyahu might be fronting it, and Trump might be providing the firepower, but this is Mohammed bin Salman's war against the Ayatollahs he so hates. The New York Times published on 15th March, citing several US officials, that Mohammed bin Salman, or MBS, has been privately urging Trump throughout the war to keep hitting the Iranians hard. This echoes the Washington Post's pre-war reporting that MBS made multiple private calls in February advocating his strikes before Epic Fury launched. The Crown Prince, who publicly maintains neutrality, is privately running the most hawkish back channel in the conflict. And then there is the overlay of Arab versus Persian.
The clash of civilizations thesis, the bugbear of all liberals of the world, seemingly coming true. And oh, isn't it about oil? Well, yes, it's about oil and China in equal parts for sure. About oil, reams and reams of paper and petabytes of news has been done since the first oil shock of 1973. On China, I would only say this. If you have observed the deafening silence of Xi Jinping, that's what Napoleon Bonaparte said. Never interrupt your enemy when he is making a mistake. Hope the Americans see that. Moving to the next one. बालेन्द्र शाह नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ गर्नेछु That civil engineer turned rapper turned politician turned mayor of Kathmandu taking oath as the Prime Minister of Nepal. Balendra Shah is the youngest leader of Nepal ever. Fittingly so, for he was brought to power by a youth quake of Gen Z protests that rocked Nepal in September last year. It is not just a change of government, it is hope for a new dawn, a new politics, a break from the past. A clean slate for the citizens of Nepal. It is a moment of both a generational shift and a political transformation that's rare in modern history. The entire old crop of leaders stands wiped out. The old guard is decimated. Balen himself defeated former PM communist leader KP Sharma Oli by a big margin. A young generation has taken center stage in national decision-making, bringing median age of parliament to below 37, exactly that of the Prime Minister who was born in 1990. This shift reflects the aspirations of a generation of Nepalis whose ambitions have long been bigger than what the country under the old guard was able to offer. Such has been the pull of Balen, that is party, the Rashtriya Swatantra Party, or RSP, set up by TV journalist turned politician Rabi Lamichhane, had to designate him leader to pull itself into reckoning from a distant fourth spot in the 2022 general elections. To the credit of Lamichhane, he amended the constitution of RSP to accommodate Balen, putting to rest the rumors of two swords in one scabbard in Kathmandu. Set up in 2022 on the eve of general elections, the RSP catapulted to almost two-thirds majority in the snap polls of March 5, cornering 182 seats in the 275-member lower house of Nepal parliament. Balen has sought to live the spirit of the Gen Z movement by limiting the size of his government and wants experts and technocrats to join in key positions. But it's one thing to win elections and another to turn public frustration into stable exercise of power. The first hornet's nest for Balen to handle would be the Karki Commission report into the Gen Z violence. The protests had left 77 dead and property worth billions destroyed. The report makes specific recommendations on action against the 10 Prime Minister Oli, his Home Minister, top police officers, and even some in the Nepal army. The action would not be easy to come by. The report also draws a pattern through the violence of how the rioters followed a template. CCTV cameras were shut or broken. The targeted property had its water and gas supply cut. Papers and documents were taken out before the arson. Similar nature of petrol bombs at all places, choice of symbols of power as targets from the Parliament building to the Supreme Court, among others. Essentially,
not ruling out a premeditated and hence a conspired revolt. Nepal was struggling to find its voice, smothered by a ruling elite that kept its politics in a vice-like grip for decades. As we have profiled earlier, 6 top leaders, KP Sharma Oli, Pushpa Kumar Dahal alias